रखोगे। इनके अलावा उन दुश्मनों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें खूब जानता है। तुम राय खुदा में जो चीज भी कुर्बान करोगे उसका पूरा अजर तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी हक तलफी नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। May I now request the Honorable Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu, Nishane-e-Imtiaz Military, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, to kindly take the podium for his address. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Federal Ministers, Service Chief, General and Air Officers, distinguished guests from People Republic of China, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my profound privilege to welcome you to the induction ceremony of J-10C aircraft. Indeed, it is a historic occasion, and I'm extremely grateful to the Prime Minister for gracing this event with this extreme presence. I also express my deep gratitude to all the distinguished guests for honoring us with their presence today. Ladies and gentlemen, we live in a challenging time in the wake of evolving global and regional environment. The rapidly changing geostrategic environment has profound impact on the region as well as Pakistan. In addition, pace of changing technology in contemporary world continuously to alter the character of war at fast pace. Advancement in space, network, electronic warfare, cyberspace, nanotechnology, and miniaturization coupled with artificial intelligence have profoundly affected the traditional concept of national security and defense. In order to provide safe and secure environment to our nation against all threat, the armed forces of Pakistan continue to synergize their effort, bridging capability gap through timely induction programs. Considering modern parameters of warfare, induction of J-10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort, which merit profound appreciation at all levels. Your Excellency, the Prime Minister, I must acknowledge outstanding support that the PF received from the government of Pakistan under your able leadership, despite challenges and stress of COVID pandemic. This milestone could not have been possible without your kind patronage in providing the fiscal space to equip Pakistan Air Force with this weapon system within a short span of 8 months. I would like to make a special mention of the all-out support by the Chief of Army Staff. I may also mention that all ranks and files of Pakistan Air Force admire his vision and personal involvement to see the manifestation of this project. And I am also extremely grateful for his support in other PF projects of national importance.
Ladies and gentlemen, this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. I'm extremely grateful to the Chinese political and military leadership, as well as His Excellency Chinese Ambassador and his team in Pakistan for their assistance and cooperation. Effort by the management of CATEC and their staff is also worth praising. Lastly, I commend the dedication and the professionalism of my team for successful induction of this weapon system in a record time despite several challenges. Ladies and gentlemen, induction ceremony of J-10C aircraft has many significant aspects to it. Today, after a gap of almost 4 decades, Pakistan Air Force is inducting next generation combat system with all this concept, state-of-the-art technology and weaponry. Last such event was in 1982 when F-16 aircraft joined the Pakistan fleet. Number 15 Squadron, also known as Cobras, is the first Pakistan Air Force squadron to be equipped with J-10C Dragons. Ladies and gentlemen, on a personal note, number 15 Squadron was my first unit where I began my journey as a fighter pilot. Later, I had the privilege to command this elite squadron also. Number 15 Squadron has a glorious history of service to Pakistan, both during war and in peace. The squadron has the distinction of PIF first kill on 10th April 1959 when Flight Lieutenant Muhammad Yunus shot down an Indian Air Force Canberra over Rawalpindi. Later, the unit actively participated in both 1965 and 75 wars. More recently, the squadron provided the main offensive effort during Operation Swift Retard on 27th February 2019 with desired effect. Re-equipment of Cobras with J-10C is certainly a well-earned honor for this battle-tested and decorated PF squadron. At the same time, it has also placed a huge responsibility on the leadership and personnel of this unit to operationalize the capability as quickly as possible. Ladies and gentlemen, J-10C has a fully integrated weapons, avionics, and EW suite that make it a potent combat system under the contemporary environment of non-contact warfare. The aircraft is configured with world's top-class weapon, including PL-15 air-to-air missile and variety of stand-up position munitions, ISA radars, net-centric and sensor fusion capabilities enable it to detect, engage, and destroy targets at long range, both in air-to-air as well as air-to-surface domain. With multi-domain capability, J-10C aircraft would indeed revolutionize Pakistan Air Force operational thought. It will enhance net-centric and integrated employment of electronic warfare while ensuring retention of first-shot capability. Undoubtedly, PAF has always been fully motivated, trained, and skilled to deter any aggression and misadventure, regardless of the quantum of the threat. However, induction of this weapon system will further enhance Pakistan Air Force capability to effectively deal with the requirement of contemporary aerial warfare. I am confident the pilot and the technician of number 15 multi-role squadron shall ensure smooth and swift induction of this capability with professionalism and commitment, upholding Pakistan Air Force legacy, inshallah. Ladies and gentlemen, alhamdulillah, under all challenging situations, Pakistan Air Force has proved equal to the task. PF has always fought outnumbered and lived up to the expectation of our great nation. We have never attempted to match numbers nor wish to be in any arm race. However, we continue to enhance our capability to ensure national security and regional stability. Ladies and gentlemen, to meet contemporary threats, our focus is on strategic restructuring. In this regard, Pakistan Air Force is pursuing a well-crafted developmental strategy, smart induction programs, putting hands on niche and disruptive technologies,
human resource development with modern parameters from our nursery to professional military education, high quality combat training to maintain highest level of readiness across all domains, and focused on major R&D to promote government indigenization effort for economic prosperity of Pakistan. Ladies and gentlemen, I would like to share that the aerospace industry is globally treated as strategic industry based on technological, fiscal, social, and national security dividends. It is projected at more than $10 trillion for next 20 years. Moreover, cyber and IT industry also fall in line with aerospace industry owing to its tremendous growth and pivotal role. In this regard, Government of Pakistan has undertaken several key initiatives, including formulation of Special Technology Zone Authority and National Aviation Policy to harness potential of aerospace, cyber, and IT industry. In line with the vision of His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, PF Alhamdulillah, has launched a flagship project called National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. The NASTAP project aims to establish aerospace cluster at Kamra as well as Technopark in major cities and reputed university across Pakistan. The project is well poised to harness niche technologies including robotics, UAVs, radars, software-defined radios, as well as futuristic capability in smart material, 3D printing, sensor fusion, supercomputing, artificial intelligence, to name a few. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support of Government of Pakistan in establishing this premier institution of aerospace and academia linkages. As a project of strategic national importance for which I express my extreme gratitude. PF will inshallah continue to bring good news for the nation in near future in this regard. Ladies and gentlemen, in the end, I congratulate the whole nation on the induction of J-10C weapon system for Pakistan today. I once again sincerely thank His Excellency the Prime Minister of Pakistan for his patronage and presence here today. I'm also extremely grateful to all distinguished guests for sparing their valuable time and gracing this historic event. May Allah bless our collective effort to fully contribute towards prosperity of people and progress of great nation. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Paindabad. May I now request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to kindly address the gathering. Janab Air Force Chief Zahir Ahmed Babar Sahib, Federal Ministers, Services Chiefs, हमारे Chinese guests, officers, मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद, 40 साल पहले F-16s हमें अभी भी याद है कि जब इंडक्ट हुए थे हमारी एयर फोर्स में, तो पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी की लहर भागी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं लेटेस्ट एरोप्लेन से एयर फोर्स के अंदर। और उसके बाद अब ये जो आज हमने डिस्प्ले देखी है J-10C की, ये हमारी कौम को इसलिए हम मुबारक देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमारे बर्रे सगीर में, और उस इम्बैलेंस, सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये एक आज अल्लाह का करम है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है हमारी डिफेंस सिस्टम में। मैं इसके लिए चाइना का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी कौम की तरफ से चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी रिकॉर्ड टाइम, गालिबन 8 महीने के अंदर ये हमें
جیٹس پرووائڈ کیے ہیں، جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں. اور دوسرا میں چیف آپ کو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی ماڈرنسٹ تھنکنگ ہماری آرم فورسز کے اندر آ گئی ہے. کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو فیوچر وارفیئر ہے اس کے اوپر تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا. تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ساری ماڈل ٹیکنالوجیز ہوں گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن، ہر فیلڈ کے اندر کوالٹی پروفیشنلز پاکستانیز آج اویلیبل ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلیبل ہوگا. میرا یہ ایمان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی، کہ جب بھی ہم انشاءاللہ اس ملک میں جس طرح یہ آگے بڑھے گا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. مجھے پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آرمڈ فورسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرمڈ فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا رسپانس تھا، ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ احساس آج دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہو. تو آج ہماری قوم، میں یہ اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی قربانیاں دے کے ہم نے یہ پچھلے 2003-4 کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے، ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کی جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے، یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے. اجڑ گئے ہم ملک. اب دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، تو ملک اجڑ جاتے ہیں. لیکن جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا، تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو میں آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ڈسپلے دیکھی ہے، مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. پاکستان جب بنا تھا، اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریباً، کہ ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے، خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکے. تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کا کرم ہے، ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ
बढ़ेगा, मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, तो दो तरफ हमारा पैसा जाएगा। पहली प्रायोरिटी कि अपने मुल्क में गुर्बत कम करनी, अपने निचले तबके के पैसा खर्च करना, हेल्थ कार्ड जैसा जो कि डेवलप्ड मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं, हर ख़ानदान को ये जो 10 लाख की इंश्योरेंस देना, और फिर एहसास प्रोग्राम्स कि नीचे से लोगों को ऊपर उठाना। और दूसरा, जैसे जैसे हमारे पास वेल्थ क्रिएशन होगी, इंशाल्लाह अपने डिफेंस के ऊपर हम खर्च करेंगे और मजबूत करने के लिए, क्योंकि असल में तो जब असल आपकी ताकत यह है कि कोई आपको जंग लड़नी ना पड़े, कि लोगों को ये पता चल जाए कि इनके पास इतनी तैयारी है कि जब अगर वो उनके ऊपर किसी किस्म की एग्रेशन करेंगे तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इंशाल्लाह इन दो तरफ हम अपना पूरा अगला जो हमारी बजट की प्रायोरिटीज़ डालेंगे। मैं स्क्वाड्रन 15 को आपको भी आज एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि जो हमने डिस्प्ले देखी और ये जो आपने रिकॉर्ड टाइम पे ये नए एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो काबू पाया, तो आपको भी मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। May I now request His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, Chief of the Air Staff, Services Chiefs and Honorable Ministers to kindly proceed towards the aircraft for inspection. वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीब से खिताब भी किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के मौके पर तकरीब, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त एयरक्राफ्ट का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़िर आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत। एयर चीफ इस वक्त एयरक्राफ्ट के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कॉकपिट में मौजूद हैं। उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, एयर चीफ भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को इस तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। J-10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत, और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एयरक्राफ्ट की खुसूसियात के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। इस वक्त आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और एयर चीफ भी इस मौके पर मौजूद हैं।
इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी J10C का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त कॉकपिट में मौजूद हैं और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त एयरक्राफ्ट का मुआयना कर रहे हैं, कॉकपिट में मौजूद हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त एयर चीफ वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर रहे हैं तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुआयना किया है और इस वक्त वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़र आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कॉकपिट के अंदर मौजूद हैं और उनको ब्रीफ किया जा रहा है। एयर चीफ ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को J10C की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J10C की शमूलियत पाकिस्तान एयरफोर्स में और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। वो कॉकपिट में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और वफाकी वज़ीर असद उमर भी इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। J10C पाक फ़ज़ाइया में शामिल हो चुका है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की शमूलियत के मौके पर इस वक्त वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉकपिट के अंदर मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को तफ़सीलन इस तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक आगाह किया गया है, ब्रीफ किया गया है और इस वक्त आप मनासिर देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर भी तैयारे के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन भी तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़र आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई जदीद लड़ाका तैयारे J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के हवाले से आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त ग्रुप फ़ोटो के लिए तमाम लोग जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और दीगर जवानों के साथ फ़ोटो के लिए ग्रुप फ़ोटो के लिए जा रहे हैं और उनके साथ वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ग्रुप फ़ोटो के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं।